तो गाइस नमस्कारम। तो आज हम बात करेंगे यंग मैन बीइंग अ जोक टुडे। टाइटल पढ़ के होगा वो क्या एकदम बकैती कर रहे हैं गंजा काइंड ऑफ। कई लोग तो होंगे ट्रिगर कि यार अब तो इसकी एज हो रही है तो ये हमें क्या बाचेगा, खुद इसने कुछ किया नहीं है, वैसा एटीट्यूड। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। आई थिंक प्रिडोमिनेंटली these are just certain patterns which I see, and अगर आप सुन लेंगे थोड़ा ओपन माइंड से क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, pick what you want and then you can discard the rest. I think it just helps all of us rather than getting triggered. And सबसे important चीज, सबको बस ट्रिगर होने में आजकल बड़ा स्वाद आता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या जिंदगी के कैसे लगे, विच आई विल कम अभी अच्छे से वीडियोस में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि I was having some discussions and then I have some accounts on my socials with some different names just to understand the algorithms, what goes on in a very different light. And then I see that there are these women who quote unquote are dating coaches, ठीक है, and then they talk about कि यार लड़कियों का ये सीन है वैसा सीन है, आप ऐसे से फ्रेम करो. Of course those are good messages and stuff, but then I realized a lot of things about a lot of patterns which I see in general. अभी क्या हो गया है? I was also talking this a lot with some of my friends and stuff. तो क्या है कि यार अभी लेट्स आपको इंस्टाग्राम पे आप रिकमेंडेशंस आती है ना कि यू कैन ऐड सर्टेन सच पीपल. तो ऐसे रैंडमली आई जस्ट स्टार्टेड क्लिकिंग सम प्रोफाइल्स एंड वहां पे ना लेजिट आ रहा है प्राउड मिसैंडरिस्ट. Misandrist, those of you who don't know, is a person who hates men, like a misogynist, but in an opposite way. ठीक है. एंड देन आई रियलाइज कि यार अगर एक लौंडा ये सब लिखे प्राउड मिसोजिनिस्ट ये सब अपनी बायो में, पहले तो चलो हिम्मत ही नहीं होगी, अगर कहीं लिख भी दे उसकी फटते रहेगी. या लेट्स से भी बहुत ही नॉर्मली है. लेट्स से देयर आर सम चांसेस कि यार ठीक है अब नेट नोट ही इज बीइंग थोड़ा मीडिया से धकेला गया है, क्योंकि और तो कोई इश्यूज नहीं होते, छोटे छोटे इश्यूज उठा के तेल ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. तो इंस्टेंटली आप देखेंगे एफआईआर, एक फलाना कमीशन, सब उस पे केस करेंगे कि यार अब तो औरतें खतरे में और उस टाइप का. एंड वहीं दूसरे छोर पे आप देख रहे हैं लाइक दीज लेडीज डोंट हैव एनी कॉन्सिक्वेंसेस, और लेट्स से दिस गर्ल्स. ठीक है, कितनी सोशल सेटिंग्स में आप बैठते हो, आप देखते हो कि लेट्स से बुढ़िया हैं लेजिट इन द 50s 60s, तो उनको ये नहीं ऐसे हम एड्रेस करते यार कि दीज आर वुमेन, दीज आर लेडीज एंड स्टफ. पता नहीं उनको बहुत ही आनंद आता है जब उन्हें सब बोलते हो गर्ल्स हाउ यू डूइंग, एज इफ जवानी अभी तक 20 21 में ही रहना है. आपको पता है आपका सीन क्या है यार. कोई आप पे अब घास नहीं डालेगा, आपको बस एक जवानी वाला एक वो थ्रिल फील करना है फिर से. विच इज वेरी वियर्ड टू मी. लाइक जब आप भाषा देखती हो अंडरस्टैंड एंड द वे पीपल रिस्पॉन्ड टू इट, यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली मूव्स देम. एंड या पॉइंट क्या है इस चीज का, व्हाई आई एम सेइंग दैट यंग मैन आर अ जोक टुडे. सी मेन इन जनरल, अगर एक बेसिक साइंस पे जाए एकदम बहुत जनरल बात है, बाय द लॉ ऑफ नेचर वी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन जो आपके नीचे है उसकी वजह से. ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी natural hormone type which just inspires you to go out, build, have that conquering spirit and things like that. ठीक है, अभी मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि हमें इतनी पट्टी पढ़ाई गई है ना यार ये कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी ही शक्ति, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देन द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस आई सी दैट अ लॉट ऑफ मेल्स आर जस्ट बीइंग ड्रिफ्टेड ऑन द साइड. लेट्स से आप कितने ऑर्गेनाइजेशंस उठा के देखते हैं जहाँ पे there are things of betterment. Let's take an example of a spiritual organization. It could be any organization across the board. Usually, the ratio of women or girls present in general is much more as compared to the males. Now, there could be a lot of reasons, inclinations. Maybe the males are just stressed a lot about work, जिसकी वजह से सब पे time नहीं मिलता. And then सब could put forth the argument कि यार women ज़्यादा free हैं, so they get all this time and things like that. ठीक है, but
like what's the purpose of, let's say, spiritual organization, or let's say spirituality in general, is the upgradation of life, right? Betterment of your core, betterment of the internal person that you are, so that you can make better choices as a person, ठीक है? मैं देखता हूँ यार कि एकदम ही मतलब लौंडे साइड हुए हैं इस सब चीजों से, एंड जो है भी, दे आर नॉट दैट मच कमिटेड कि हम मतलब ना चलो कुछ बेड़ा उठाते हैं, कुछ चैलेंजेस उठाते हैं, बिकॉज ट्रू स्पिरिचुअलिटी आई फील इन माय आईज इज just taking up a lot of challenges, both in your own life, internally as well as externally, be it on the level of self discipline or let's say outer discipline, some goals and targets that you're chasing, ठीक है? अभी मैंने ये देख लिया यार लॉन्डो का सीन कि हम ना बस आराम से बैठे रहेंगे पीछे। कितने लौंडे मेरे साथ लाइक यू नो हैव दीस कॉन्वर्सेशंस कि यार अभी उम्र 24-25 की हुई है, and बंदा क्या बोल रहा है, बस यार ज्यादा एम्बिशन नहीं है लाइफ में, कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, बेकार सी जॉब मिल जाए, मतलब ऑफ कोर्स ही इज नॉट स्टेटिंग इट लाइक दिस, बट बस एक आराम सी जॉब जहाँ ज्यादा धक्के ना हो, एकदम बस बेसिक सा काम करते रहें, एंड देन बस ऐसे ही कट जाए जिंदगी। एंड देन जैसी 30 होगा प्रो, जब पता लगते हैं डंडे पड़ रहे हैं घर से कि यार अब तो शादी और इस सब का सीन है, बस एक एवरेज सी लाइफ में सेटल इन हो जाओ विदाउट इवन नोइंग यार पोटेंशियल क्या है। दूसरी छोर पे आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस let's say women empowerment और ये सब, women on the other hand are exploring a lot of tangents in life, seeing यार मैं किन किन अपॉर्चुनिटी से क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। I don't know why we as men have stopped doing that और एक अपने weird से comfort में आ गए हैं, because I realized one thing, like after reading history and a lot of quotes which are like, let's say, writing, uh, so there's a quote that, let's say, if the men of a society become weak, eventually that society would crumble in the long run, and अभी आप देख ही रहे इसके consequences, because you see so many cases happening of like the Ketans and the Sias of the world, and then a lot of these other things, that the divide is just getting bigger and bigger, and इस सब से क्या हो रहा है, like males just don't understand it. Let's say if you're a general male in this country, you are the least privileged fuck, because you don't have any quotas, and I'm assuming a lot of people who watch YouTube in general are mostly middle class people trying to figure out a way for themselves. तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज हैं, पॉलिटिकल जैक्स हैं, मतलब अच्छे से फील्डिंग सेट है हर जगह से, और हम ना मतलब इतना oblivious है इस रियलिटी को कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। लाइक इफ आई गो बैक टू दैट एग्जांपल, इट्स a spiritual organization वाला thing, let's say even if some people have the tools to change their thing, they are in fact much more fortunate than the people जिनके पास है ही नहीं वो चीज। इट्स एक सेल्फ अवेयरनेस का उनको चांस ही नहीं मिला कभी, बट स्टिल लाइक वी आर सो इन्वेस्टेड इन अ वियर्ड कंफर्ट, या फिर ऐसा कि कई लोगों का मैंने देखा है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, यू कैन से कोट अनकोट पॉलिटिक्स, जो नॉर्मल कहते हैं ना पॉलिटिक्स हो रही है ये सब, basically it's just sorting out various human differences, but then I was reading one thing, अभी I think it would talk in the next video, कि यार हम ना जो हमारा eventual goal है, हम उससे भटक के इन सब ये जो एकदम टर्शरी और ये सारी चीजें ना, इस सब में इतना डाइवर्ट होते देते हैं that we just lose that spark to transform our own self by working with these weird sorts of people. So I had heard this long ago that there are no perfect people on this planet. These are the only type of people that we have. We would just have to learn to work with them, putting aside our own little self, our own little ego. मैं ये नहीं कह रहा कि दबे रहो, बट मैंने देखा है एटीट्यूड के, हमें ट्राई ही नहीं करना। A lot of men I see कि बस यार चला तो है, एंड क्या करते हैं लौंडे, बस पड़े हैं। I seen a lot of people wasting their life drinking, smoking. Of course, occasionally it's good, but the type of drinking and smoking I'm talking about is कि हर तीसरे चौथे दिन चलिए आपकी ड्रिंक्स, हर दिन आप स्मोक तो करते ही रहते हैं, 3 से 4 सिगरेट्स या मे बी इवन मोर। सो आई थिंक इफ यू आर नॉट सेल्फ अवेयर ना, क्या होगा कि आप ऐसे पैटर्न्स या पार्टनर्स को चूज करोगे इन लाइफ जिससे आपकी फील्डिंग अच्छे से सेट होगी, एंड देन even like if you get deleted, it wouldn't matter to anyone except your parents, or let's say the
close loved ones that you would lose in life. So it's high time I feel that this spirit of not being in comfort and just chasing challenges, trying to break your limitations in a way with which you feel proud is very important. क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि मैंने सटली एक और नैरेटिव पुश होते हुए देखता हूँ कि वुमेन तो दबी है, तो ठीक है हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे बट एट द कॉस्ट ऑफ मेल्स। क्या इन्हें तो परे करो, अब इन्होंने बहुत भोग लिया, मतलब जो भी इनका सीन है हर जगह बस वुमेन डोमिनेट करेगी एंड ऑल ऑफ दैट। I think the whole idea is to build an equal society, not men over women or women over men. But अभी क्या हो गया है, let's अगर हम एक दबके में कि let's say historically you see that how women and people have been treated, अब हम दूसरे छोर पे जा रहे हैं कि हम बस उसका पूरा ऑपोजिट करेंगे, हम दबाएंगे। एंड एज अ मैन आप देख ही रहे यार न्यूज और इस सब में हाउ मच टफ इट इज फॉर यू, बिकॉज देखिए अब चाहे जितनी हार्ड लगे बात, लड़कियों के पास हमेशा एक ऑप्शन है मैरिज का। सो आई हैव सीन पीपल इन देयर 40s 30s में मस्त ज्ञान बोलेंगे कि यार अब तो मैरिज का हमारा सीन नहीं है। एंड जैसे ही 40s टच हो रहे हैं आपको दिख रहा है कि यार जैसे अब करियर कुरियर से थोड़ा निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ एज एंड थिंग्स लाइक दैट, मस्त दीदी जी ढूंढती है एक पार्टनर बाहर से और मस्त अपना सेटिंग लगा के वीजा निकाल के बाहर निकल लेती है। तो जितने आपको लेके पढ़ाया जाए ना क्या, लेट्स से लड़कियां बोले नहीं नहीं हमारा मैरिज का सीन नहीं है, when push comes to shove they'll definitely find a simp and then they'll get out, चाहे फिर उसका डिवोर्स हो रहा है कुछ नहीं। बट आप देख ली स्ट्रैटेजिकली ऑल दीज डिसीजंस आर बीइंग टेकन दैट यूं इंसान अपने मॉरल्स चेंज करता है जब अपना फायदा दिख रहा है उसे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट बट ये प्रैक्टिकल रियलिटी लेना बहुत जरूरी है। एज अ मेल like this is just a hard fact statistically, if like there was a survey done, I was reading it कि let's say लड़के से पूछा गया कि यार आप अपने से कम वालों को let's say जॉब से फाइनेंशियली अर्न करता है, how many of you would date? So I think 6 or 7 of them kind of outright rejected. That means 70% population or 80% population of the girls are kind of rejecting you. अब let's say आप इंडियन हो, ठीक है, of course through some stroke of luck, maybe through some compatibility you can find some outside girl, you can get your setting from a visa perspective and things like that. But the idea is not a lot of women would do that. A lot of women would just date up. That's how the nature of evolution has been. Girls always have this option कि ठीक है कुछ बन नहीं रहा हम शादी करके बाहर निकलेंगे, चाहे जैसा भी सीन। Like I am not discounting the fact that there are toxic marriages. She's also taking a risk and things like that. But that possibility is always open to her at any age, regardless. I've seen a lot of divorced women remarrying in better circumstances, going through the same cycle. And then there's some weird realities. I was watching abhi kuch videos. जहाँ पे there are these single moms who are getting must child support का पैसा, and then they're splurging it on alcohol, drinks, and all of that. I to chalo know a lot of people who are actively in such patterns. But point kya hai? I think as a young man, you shouldn't just be in comfort. The idea should be to just challenge yourself to the extreme most ends so that you can become self-aware and know कि यार किस तरफ ले जानी है गाड़ी। अभी एकदम ऐसा एटीट्यूड है यार कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा दो कौड़ी के इंसान की तरह, which really disheartens me on one level because यार हमारी हिस्ट्री देखिए आप, the young people, let's say people whom I deeply admire, Bhagat Singh ji and Sukhdev and Rajguru and all of that, from just a young perspective, the Swami Vivekanands of the world, यार जवानी में they went all out, like इस लेवल की क्लैरिटी रखना, लेट्स से फॉर भगत सिंह जी, मतलब आपको लगता है कि यार अनपढ़ थे वो, ही वॉज अ वेरी वेरी वेल रेड पर्सन, कि मतलब 23 24 में ये डिसीजन ले लेना कि यार मैं तो मतलब खुशी खुशी चढ़ूंगा सूली पे, दैट रिक्वायर्स बॉल्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्टिवली, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अभी रिसेंटली with the whole Sonam thing, the education thing, how many young people would just move past their Instagram stories which just last for 24 hours
and let's say make dedicated videos, आपको दिखता है कितना outrage हो रहा है सोशल मीडिया में 24 घंटे के लिए, because there is no accountability. Let's say you make a dedicated video, then you have to be accountable for your opinion, and not a lot of people have that courage कि यार छोड़ो, कौन फंसे इस सब चीजों में, you know how things are. But anyhow, that's off topic. I think the point is the level of courage in testosterone या गोटे जो थे उन लोगों के पास, I don't know where we have lost that. एक लाइन ऑफ थॉट ये कि देयर इज लाइक रैडिकल फेमिनाइजेशन ऑफ मेन इन जनरल, क्या मेन तो इविल है ये सब, एंड देन हमारी मैस्कुलिनिटी दबाई जा रही है, व्हिच आई फील इज वेरी वैलिड. बट देन द पॉइंट इज व्हाई आर यू बाइंग दैट शिट व्हेन यू कैन जस्ट बी सेल्फ अवेयर. आपको बस आँख खोल के देखनी है यार, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, पढ़ना लिखना शुरू करना है कि यार ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, स्टैटिस्टिकली इसके क्या रीजंस हैं. एंड कई बार मैंने ये देखा है, हम लोग टॉक्सिक रिलेशन सब में इतना फंस जाते हैं डिस्पाइट सीइंग दी रेड फ्लैग्स, क्योंकि यार लस से ऊपर नहीं सोचा जाता कि नहीं चलो थोड़ा प्लेजर है. अभी तो यार मैं लेजिट देखता हूँ. तो सो देयर वाज दिस पर्सन, अननोन पर्सन in my vicinity, and that guy was the kind of in a live-in relationship being threatened कि यार अगर तू मेरे को छोड़ के जाएगा तो देख मैं तेरे पे ऐसे से केसेस ये सब कर बंदे की फटते ही रहे. मतलब फॉर्चुनेटली इज वेल नाउ, बट the trauma that he took for 3 to 4 years is like, God only forbid if anyone gets that. And ये सब तब बंद हो जाता when you could have just clearly seen the red flags, walked away with dignity क्या नहीं है मेरा सीन. And then also having the spine की ठीक है जो actions जो कुछ भी होगा I'll just handle them. So I think that's the thing कि यार हम strong man बनना ही नहीं चाह रहे, हम इतने weak हैं ना अपने comforts में, ना commitment है ना intent है. So I don't know like what is it that you're challenging in life. I know situations बहुत brutal होती है for men. Lot of us just want to spend our time in peace when we are coming from these overly working things and things like that. But the point is यार, why are you losing yourself? Like जब आप कॉलेज में थे उस लौंडे को याद करिए जो एक जील के साथ था लाइफ में ना, एक्सप्लोर करता था चीजें. Where have you lost all of that just because you turned 30? अभी मेरी कल की वीडियो थी that how the system is kind of rigged and makes you feel कि 30 के बाद कुछ नहीं है सीन. ठीक है, maybe it might be a bit hard, but then the point is when you have repeatedly seen that how, let's say, this quote unquote system, the societal system fails you on all levels from childhood, why then you are wanting to be a part of it कि यार चलो अब शादी कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और जो भी वो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि चलो अब शादी हो गया तो बच्चा भी आना ही चाहिए हमें, उस टाइप का एटीट्यूड. Why don't you have the courage to say कि it just does not matter to me, let me first become self aware, and then उस रास्ते पे या राह पे कोई मिल जाए, then that's a different thing. So I think ये जो दो तीन perspectives थे, because sometimes I feel a lot of us are also overtaken by these tendencies of comfort कि हम तो कुछ नहीं करेंगे. All of us have been victims for it, and it's hard these days. I understand पूरा distraction और इस सब के through, but then वही है challenge कि how much of less distractions you can have in life, how much you can just focus on becoming a person who would be reliable and dependent when tough times hit या when push comes to shove. एंड उसकी ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि एक दिन जब आएगा टफ टाइम तो मैं एकदम से मतलब वहां सब मस्त कैपेबिलिटी आएगी. दैट्स अ डेली डे इन डे आउट प्रोसेस, दैट ट्रेनिंग. Life is always wanting to train you for the worst. It's just that are you willing to open your eyes to receive that training from the universe or not? So I think यही थी एक वीडियो. आप लिखिए यार आपकी क्या ओपिनियंस एंड कमेंट्स है. These were just some thoughts which were coming on the top of my head, and then I had just seen a lot of people doing all these big talks कि यार हम तो ऐसी बात करते हैं, हमें तो ऐसे से बढ़ानी है चीजें, मतलब सिर्फ बातें. जब आप एक्शन उठा के देखते हैं यार वो मैदान में ही नहीं खड़ा है, वो इंसान कमिटमेंट ही नहीं है उस इंसान में. आप देखते हो पड़ा है, गांजा फूक रहा है या सिगरेट सुट्टे मार रहा है या दारू का ग्लास अटका रहा है हर 4-5 दिन बाद. मतलब sometimes it just baffles me कि the level of words which people share, let's say in group settings, कि यार हम तो मतलब ये फाड़ देंगे, और
जब आप उनका एक्शन उठा के देखते हो, लाइक नॉट इवन 1 to 2% बैक दैट, मतलब 1-2% एक्शंस भी नहीं है वो जो इतनी ग्रैंडियोस बातें की थी. तो आई थिंक ये एक दो पर्सपेक्टिव्स थे व्हिच आई वांटेड टू शेयर. एंड या देखिए यार कमेंट सेक्शन में कितना काम किया है, क्या लिमिटेशंस तोड़ी हैं. एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अंटिल देन यू स्टे ऑसम and keep winning, or keep surviving if I have to use this word. And yeah, you take care. This is Debashish Vindra signing off. Cheers.